So in our last video, we have done trigonometric equations, and you know what is trigonometric equation? The equations of a trigonometric function, equation that involve trigonometric functions of a variable, that is called trigonometric equation. So we have done this in last video. You understood the concept, I hope. So today we'll do sums based on trigonometric equations. Okay, so let's start. Is equal to -3/2. So साइन का कौन सा वैल्यू -3/2 होता है? साइन 60 डिग्री, मतलब साइन π/3 is equal to √3/2. Okay, π/3 is equal to √3/2. But this is minus. So minus कौन से quadrant पे होगा? In this and this quadrant sign is positive. So this one and this one, ये सारे में sign is negative. Okay, so these are the two quadrants जहाँ पे sign positive नहीं होता है, negative होता है. Okay, now so there will be या तो in third quadrant होगा जो कि pi plus pi/3 होगा, या फिर this is 2 pi minus pi/3. Okay, so there are two options. So for this one, sine x is equal to sine minus pi/3. Minus pi/3 मतलब sine pi plus pi/3, that is equal to sine 4 pi/3. And another one, there is one more case. In this case, sine x will be equal to sine 2 pi minus pi/3, because in fourth quadrant, in fourth quadrant too, the sine का value will be negative in fourth quadrant also. Okay, so sine 2 pi minus pi/3 will be equal to this one, वो भी negative होगा, minus √3/2. So 2 pi minus pi will be 6 minus 1 5 sine 5 pi/3. Okay, so 4 pi/3 and 5 pi/3 will be equal to, तो solution x का solution will be x will be equal to 4 pi/3 and 5 pi/3. So we have another question. If sine का value is given, sine x is equal to 3/5, cos y is equal to -12/13, and x and y both lies in the second quadrant. X and y both lies in the second quadrant. ठीक है, so that's why cos is negative, because second quadrant में cos negative होता है and sin is positive because sin positive होता है. Okay, now why? Because sin depends on y axis. Y axis तो इधर दोनों साइड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही है, बट cos depends on x axis, तो x axis second quadrant में negative है. Okay, so we have discussed this about cos and sin जो x and y axis पे depend करता है many times. Okay, so now we'll talk about the sum. क्या है? We have to find out the value of sin x plus y. So as we all know that sin x plus y का फॉर्मूला क्या होता है? sin x cos y plus cos x sin y. Now we have the value of sin x. So can we find out the value of cos x? Cos x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना. What will be the value of cos x? See, cos x का वैल्यू, cos square x का वैल्यू क्या होगा? 1 minus sin square x. ठीक है, so cos x का वैल्यू will be square root of plus minus square root of 1 minus sin square x. तो 1 minus sin square x का वैल्यू 9 divided by 25. Okay, because square of 3 will be 9 and square of 5 will be 25. So it will be plus minus square root of 1 minus 9 divided by 25. तो it will be 16/25. ठीक है, तो 16/25 will be क्या होगा? प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी cos x क्या वैल्यू विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? विच वैल्यू विल टेक? प्लस माइनस में से विल टेक माइनस, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos का वैल्यू विल बी negative, so it will be minus, and square root of 16 will be 4 and square root of 25 will be 5.
So this will be the value of cos x. ठीक है. So sin x we are having cos x का value we got, that is 4/5. Now we have to find out the value of this cos y we are having. So cos हमें sin y का value find out करना है. तो cos y is equal to -12/13. So sin y will be equal to plus minus square root of 1 minus cos square y. तो cos square y क्या होगा? Square of 12 will be, square of -12 will be 144 and square of 13 will be 169. So this will be what value will get? Plus minus 25 divided by 169. And which value will take plus या minus? Sign will be positive in second quadrant, so value of sin y will be positive. So we'll take plus value. Okay, so positive value will take, and 25 का square root will be 5 and 169 का square root will be 13. So this will be the value for sin y. So sin y का value will be 5/13. ठीक है. Now we have to find out the value of sin x plus y. So सबसे पहले sin x, that is 3/5 multiplied by cos y multiplied by -12/13. ठीक है. Plus cos x का value will be -4/5 Now sin y, तो sin y का value is 5/13, so multiplied by 5/13. Now what we'll do, हम common ले लेंगे 1/5 into 13 हम common ले लेंगे, that will be 65. Okay, so 1/65 we'll take common. So what value we are getting? -36, and this will be -20. So this will be minus 56 and denominator में 65 is there. So the value will be -56 divided by 65. We have this question, next question. Here you have to prove that cos 2x cos x upon 2 minus cos 3x into cos 9x upon 2 is equal to sin 5x into sin 5x upon 2. So first of all we'll take LHS and LHS लेकर चलते हैं, and so we'll write this cos 2x cos x upon 2, okay, minus cos 9x upon 2, can we write like this, cos 9x upon 2 into cos 3x, just आगे पीछे किया, right? And now what we can do, एक और काम कर सकते हैं हम, if we'll multiply with 2 and divide by 1 upon, मतलब divide by 2 and multiply by 2 both the sides. Okay, so what value will get? 1/2 2 cos a cos b, क्या होता है फॉर्मूला? cos a plus b plus cos a minus b. Okay, so cos a मतलब कि 2x plus x upon 2 plus cos 2x minus x upon 2, ठीक है, minus cos a cos b, so cos a plus b plus cos a minus b, so cos a plus b plus cos a minus b. Okay, now 1/2 अभी now what we'll do, हम ये ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, so ये माइनस में हो जाएगा, so cos 2x plus x upon 2 क्या होगा? 4x plus 1 5x upon 2 plus cos 2x minus x upon 2 4x minus 1 3x upon 2, ठीक है, minus this will be minus and minus से ये भी multiply होगा, this will be also, इसका भी sign change हो जाएगा, right? So this is cos 9x plus 3x upon 2.
So 6x, 9x plus 6 is 15x upon 2 and यहाँ पे भी माइनस होगा cos 9x minus 9x upon 2 minus 3x. Okay, so 9x minus 6x upon 2, so it will be 3x upon 2. Okay, now cos 3x upon 2 minus cos 3x upon 2 cancel. Now what we are having, 1 upon 2 cos 5x minus cos 5x upon 2 minus cos 15x upon 2. Since we got this value, cos 5x upon 2 minus cos 15x upon 2. So cos a plus b minus cos a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? cos minus 2 sin a sin b. So what we will do here, this will be, for this one it will be minus 2 sin. ठीक है, minus 2 sin होगा. Now this plus this divided by 2. So this is 5x plus 15x upon 2. So 5x upon 5x upon, plus 15x will be 20x upon 2, 10x, and divided by 2. So 5x upon 2 plus 15x upon 2 divided by 2. Okay, now sin 5x upon 2, so 5x upon 2 minus 15x upon 2 divided by 2. Okay? This value will get. So 2 cancels. So we are having minus sin 5x upon 5x plus 15x 20x upon 2 क्या होगा? 10x. So 10x upon 2, 10x upon 2, and sin this one will be 5x upon 2 minus 15x upon 2 minus 10x upon 2. So minus 10x upon 2. So minus 10x upon 2 will be minus 5x, and minus 5x again divided by 2. So minus 5x divided by 2. ठीक है. So minus sin theta क्या होता है? Sin minus theta will be equal to minus sin theta. Okay. So it will be see. Here one minus and sin minus theta will be minus sin theta. तो वो minus बाहर आएगा, it will be minus minus plus. So sin का value will be 10x upon 2 5x multiplied by sin 5x upon 2. Okay, 5x upon 2. Is this the value? Yes, sin 5x into sin 5x upon 2. So is equal to RHS. Hence proved. So we have another question. Find the value of tan pi upon 8. How you will find out? We know the value of tan 0, tan pi by 3, pi by 6, pi by 4, pi by 2. How can we find out the value of pi by 8? See, let x is equal to pi by 8. Then 2x will be equal to 2x will be equal to pi by 4 होगा. Okay, so pi by 4 होगा. Now we'll apply tan 2x का वैल्यू. तो tan 2x का वैल्यू क्या होता है? 2 tan x divided by 1 minus tan square x. ठीक है. So we'll apply this formula. Tan 2x will be equal to tan pi by 4 will be equal to 2 tan pi by 8 divided by 1 minus tan square pi by 8. ठीक है. So this is equal to 1. So 1 is equal to 2 tan pi by 8 divided by 1 minus tan square pi by 8. ठीक है. It means 2 tan pi by 8 is equal to 1 minus tan square pi by 8. Now यहाँ पे just हमने we have taken x is equal to pi by 8. Now let y is equal to tan pi by 8. ठीक है. So this way 2y will be equal to 1 minus y square. It means
दिस साइड अगर हम लेकर जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू भी नो. कैसे फाइंड आउट करते हैं? इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो देयर विल बी टू वैल्यूज फॉर y. क्या होता है? वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो इन दिस वे क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस माइनस नहीं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ठीक है. अब यहाँ पे हम वैल्यू a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू इज a इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू इज 2, b का वैल्यू इज 2 एंड c का वैल्यू इज माइनस 1. ठीक है. सो दिस वैल्यू विल कंसिडर एंड नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन. सो a का वैल्यू इज b का वैल्यू इज 2. सो माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4. ओके. एंड माइनस 4ac 4 इंटू 1 into minus 1. So minus 4, okay, divided by 2a. So 2 into a will be 2. So it will be minus 2 plus minus 4 plus 4. Square root of 4 plus 4 क्या होगा? Square root of 8 क्या होगा? 2 root 2. So 2 root 2. Okay, divided by 2. Now we'll take 2 common. ठीक है. सो 2 कॉमन हम ले लेंगे. सो इट विल बी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है. ये वैल्यू रहेगा. ओके. नाउ एज वी नो दैट y इज पाई बाई 8 आई मीन tan पाई बाई 8. तो tan पाई बाई 8 का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा. वाई? बिकॉज पाई बाई 8 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 के बीच जो भी आएगा दैट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan का वैल्यू विल बी पॉजिटिव. तो tan का वैल्यू विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो द वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू विल टेक. सो y मतलब tan पाई बाई 8 का वैल्यू विल बी प्लस विल टेक. तो प्लस रूट 2 माइनस 1. सो रूट 2 माइनस 1. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8. ओके. I hope you understood the concept. I hope you understood the sums. For any query, any doubt, please comment. Do like, share and subscribe my channel and don't forget to click on the bell icon. Thank you.